Hello friends, welcome to the Fundamental Pharmacy. Today we are announcing our most exciting Target GPAT NIPER 2022 online coaching program. And on Sunday there was a first lecture of the same program, and due to some reason lot of student was unable to join the Google Meet or unable to join the live lecture, and that's why we are recording this video as a demo lecture part 2, because we have already given a demo lecture part 1. Okay, so this is going to be very important lecture for you, because in this lecture we are going to discuss some important process of drug absorption. We are going to discuss the process of drug absorption, and which is a hybrid part of your pharmacology as well as biopharmaceutics. So this will be a combination of your pharmacological part and biopharmaceutical part, that is drug absorption. And as far as your GPAT NIPER is concerned, this point is very important. You see, they used to ask a lot of questions from this point, and you know that last year also they have asked the question from this point. So that's why this is very important point for your exams. So let's start the video. Different process of drug absorption. Okay, so we are going to discuss the different process of drug absorption. So before that, you should know what is biological membrane, what is the nature of biological membrane, how biological membrane is there in case of our body, what type of biological membrane are present in the body. So this is our biological membrane. You can see in the diagram, this is our biological membrane. Okay, so it is nothing but the phospholipid bilayer. Bilayer means two layers, so it is made up of phospholipids and it is a bilayer. Okay, this is a extracellular and this is a intracellular. Okay, so extracellular and this round shape, whatever in the red color you are seeing, that is known as hydrophilic heads. Okay, that means they are water loving. Okay, so they are hydrophilics, and these yellow portions or yellow tails, they are hydrophobic means lipophilic. Okay, so these red dots are hydrophilic and these yellow dots are lipophilic. Okay, that means our our cell membrane is nothing but the lipid bilayer. Okay, is that clear? Now as the cell membrane is lipid bilayer, so most of the time those drugs are absorbed which are having lipid solubility. मीन्स जो भी ड्रग को लिपिड सोलिबिलिटी है वो ज्यादा एब्सॉर्ब होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर सोल्यूबल ड्रग एब्सॉर्ब भी नहीं होगा, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. ठीक है, सो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन. सो इन दैट पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, so there are two processes, passive transport and active transport. In the passive transport there are different sub processes like passive diffusion, then facilated diffusion, then pinocytosis, phagocytosis, etc. There are different processes under passive diffusion and two processes under active transport. So first process of your drug absorption, that is a passive diffusion. You should know what do you mean by drug absorption. So drug absorption is nothing but the transport of drug across the cell membrane. Transport of drug across the cell membrane. Suppose that you have taken a tablet, and that tablet is in your stomach, it has broken, it has disintegrated, it will go under dissolution, and after that the drug has to be transported across the your intestinal membrane. Okay, so presently drug is in your lumen, intestinal lumen. Okay, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ड्रग है, उसको एब्सॉर्ब होने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा. क्या क्रॉस करना पड़ेगा? इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ लिपिड बाइलेयर. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो व्हाट एवर इज द मूवमेंट ऑफ और ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस टू द इंट्रासेलुलर स्पेस, और द movement of drug across the cell membrane. Okay, movement of drug across the cell membrane, that is nothing but the drug absorption. Absorption means it is a mass transfer. It is a transport of drug from one side of membrane to the other side of membrane. Okay, from extracellular to intracellular space, or from GIT lumen to the in the blood. That is nothing but the absorption process. Okay, now we'll see the first absorption process, passive diffusion. As the name indicates, it is a passive, so there is no involvement of any kind of energy. So what do you mean by passive diffusion? It is also known as ionic diffusion. Okay,
and in this process movement of drug along with concentration gradient or electrochemical gradient, that is from a high concentration to low concentration or from a high electrical gradient to the low electrical gradient. Is that clear? That is known as a passive diffusion. And this concentration gradient or electrical gradient, that is also a driving force for the movement of drug molecule across the cell membrane. I will explain this. So suppose that this is your intestinal membrane. This vertical column is nothing but your intestinal membrane, and your drug is here in the lumen. Blue particles are nothing but your drug molecule. Okay, so this drug molecule, here is a high concentration, here is a low concentration. Okay, so at the one side of your membrane you have high concentration, at the another side of your membrane you have low concentration. So there will be movement of drug from this high concentration area to the low concentration area, and that is nothing but the diffusion. Is that clear? So movement of drug from high concentration to the low concentration, or movement of drug from high electrical gradient to the low electrical gradient, that is known as diffusion. And in this process there is no energy involved, that's why it is known as a पैसिव डिफ्यूजन. इज दैट क्लियर? हाई कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन के एरिया में मूवमेंट होगा ड्रग का. ठीक है. our cell membrane or our plasma membrane, it is nothing but the semi permeable, or rather than I would like to call it as a selectively permeable. ये सेमी परमिएबल होता है या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. ठीक है. तो मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक. ठीक है. तो उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन. इज दैट क्लियर? एंड नाउ what is the another feature of this process? So remember, 90% of drugs that are absorbed by this process, 90% of drugs are absorbed by this process, and the process is expressed by Fick's law of diffusion. Okay, most of the drugs, 90% of the drugs are absorbed by this process, by passive diffusion. 90% ड्रग्स जो होते हैं पैसिव डिफ्यूजन के तहत एब्सॉर्ब होते हैं. ठीक है. और ये पैसिव डिफ्यूजन का जो रूल है, उसका जो लॉ है, इट इज गिवन बाय फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. ये क्वेश्चन जीपैट 2018 में था. दिस वाज द क्वेश्चन इन जीपैट 2018 दैट 90% ऑफ ड्रग्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन. इज दैट क्लियर? नाउ विल सी again next point in the passive diffusion, that is this passive diffusion process is energy independent and non-saturable. Okay, so as I already told you that movement of drug from high concentration to the low concentration, in that case there is no energy involved, so that's why the process is independent of energy and it is a non-saturable. Non-saturable means what? I will explain. Non-saturable means what? I will explain. Suppose that you have 100% drug over here at one side of membrane and you have 0% over here. Now there will be a movement of drug from high concentration to the low concentration. Okay, suppose that your 50% drug has already moved from high concentration to low concentration, so there will be exactly 50% concentration across the both sides. So in that case there will be no concentration gradient and it will be saturated. The process will stop or the process will saturate, but this doesn't happen. Why? Because from this side, as drug is crossing the membrane, the drug is rapidly distributed in the blood. Okay, so that's why the concentration gradient is always maintained over here. Okay, so that concentration gradient is always maintained by rapidly distributing the drug from other side of membrane, and because of that the process is non-saturable. Okay, is that clear? Now which compound are absorbed by passive diffusion? The compounds having molecular weight between, or drugs having molecular weight between 100 to 400 daltons, they are absorbed passively. They are absorbed by passive diffusion. Is that clear? Now next point. So as I have told you, the concentration gradient is always maintained here. Okay, so concentration of drug in the GIT lumen, concentration of drug in the GIT lumen is always maintained higher than concentration of drug in the blood. Okay, to maintain a concentration gradient, to maintain a driving force, and this process is known as sink condition. Okay, so this process is known as sink condition and it is always maintained, and this is very important. This point,
that 90% of drug are absorbed by this process and it is related with Fick's law. This is the most important line and again this is important line. कौन सी? जो आपकी सिंक कंडीशन है. सिंक कंडीशन क्या होता है? जैसे आपके इंटेस्टाइन में जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज हाई रहता है देन योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड इज ऑलवेज maintained low than concentration of drug in the GIT by the process of rapidly distributing the drug from blood. Okay, and because of that the concentration of drug in the blood is always less than concentration of drug in the GIT, and because of that there is always existence of your concentration gradient, and this condition is always maintained by rapidly distributing the drug in the body, and this condition is known as सिंक कंडीशन. ओके, सो यहाँ पे दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 90% ड्रग आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड द सिंक कंडीशन. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन, दैट इज नथिंग बट द पोर ट्रांसपोर्ट. ओके, सो इन दैट केस it is also known as convective transport, bulk flow or filtration, and this mechanism is responsible for the transport of molecule into the cell through protein channel present in the cell membrane. So इसमें क्या होता है कि your cell membrane has a little small tiny pores. Your cell membrane also have small tiny pores, that is aqueous channels. Okay, so aqueous channels, absorption of small water soluble drugs along with the water. So that aqueous channel is for absorption of water and smaller molecular weight substances which are water soluble. Okay, as जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपका मेम्ब्रेन लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड बाइलेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही एब्सॉर्ब होंगे. सो स्मॉल छोटे मोलिकुलर वेट के वाटर सोल्यूबल ड्रग्स भी एब्सॉर्ब होते हैं थ्रू एक्वियस चैनल. ओके, और एक्वियस पोर, दैट इज नोन एज अ पोर ट्रांसपोर्ट. ओके, दिस पोर ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन or convective transport. Is that clear? Now what is the driving force in this case? So in the passive diffusion there was a driving force of concentration gradient, or there was a driving force of electrochemical gradient. Now in this pore transport, what is the driving force? So in this case hydrostatic pressure is the driving force. So what is meant by hydrostatic pressure? The pressure exerted by water on the cell membrane, that is nothing but the hydrostatic pressure. Okay, so that pressure is a driving force due to the difference in the concentration across the membrane. So at the one side of membrane there will be hydrostatic pressure is more, and at another side there will be less hydrostatic pressure, and this is the driving force for the movement of molecule from outer surface of membrane to the inner surface of membrane. Okay, that is a hydrostatic pressure is the driving force. Now what type of compound that are absorbed by this process? What type of compound or which kind of drugs are absorbed by pore transport? That is nothing but the molecular weight having less than 100 dalton. Okay, those compounds which have molecular weight less than 100 dalton, that are absorbed by pore transport. Okay, most of them are water soluble molecule and low molecular weight. For example, urea, water and sugar. Okay, so urea, water, sugar, all these things will be absorbed by pore transport. Is that clear? Okay, again a linear molecule up to 400 dalton, a linear molecule up to 400 dalton can be absorbed by filtration. Last year there was a question, means in GPAT 21 there was a question, what is the size of aqueous filled pores? So that was from this portion. The question was from this portion. Whatever pores are present on the cell membrane to transport the aqueous to transport the water or to transport the water soluble substances. So what is the size of that? Okay, so normally साइज होता है उसका 1 to 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट. जो नॉर्मल साइज होता है उसका 1 to 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट, जो कि पोर का साइज होता है. ठीक है, और जब उसमें पानी भर जाता है सो उसका साइज बन जाता है 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, सो साइज ऑफ एक्वियस फील्ड पोर इज नथिंग बट द 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन GPAT 2021. इज दैट क्लियर? आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोर साइज क्या है. तो एम्प्टी पोर्स का साइज होता है 1 to 3 माइक्रोन, और फील्ड पोर का साइज होता है 4 to 10 माइक्रोन. एम्प्टी एक्वियस चैनल will have size of 1 to 3 micron, and filled aqueous pores will have size of 4 to 10 micron, and this was the question in GPAT 21. Is that clear? So now we'll see the next point. The next process of drug absorption.
Next process of drug absorption is nothing but the ion pair transport. So in this case, drugs and compounds like quaternary ammonium, sulfonic acid, despite of their low and water partition coefficient values, such drug can penetrate the cell membrane by forming a reversible natural complexes with endogenous ion like GIT, endogenous ion of GIT like mucin. And the phenomenon is known as ion pore transport. Ion pore transport means क्या? एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि आपके इंटेस्टाइन में कुछ आयंस होंगे, कुछ प्रोटीनस आयंस होंगे लाइक म्यूसिन. तो ये आयन पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ड्रग्स लाइक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, सल्फोनिक एसिड, इनका पार्टीशन कोएफिशिएंट लो होता है, फिर भी ये ड्रग क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन. क्यों? क्योंकि वो जो आपके जीआईटी का जो आयंस वगैरह रहता है उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और दैट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इजीली, एंड दिस फिनोमेनॉन इज नोन एज आयन पोर ट्रांसपोर्ट. ठीक, समझ में आया? क्लियर? ड्रग्स एंड कंपाउंड लाइक क्वाटरनरी अमोनियम एंड सल्फोनिक एसिड, despite of their low partition coefficient values, such drugs they can penetrate the cell membrane by forming a reversible complexes with endogenous ions. Endogenous means आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. ओके, लाइक जीआईटी म्यूसिन, ट्रैक्ट में जो म्यूसिन होता है उसके साथ कंबाइन होगा, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और वो इजीली क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन. नाउ दिस फिनोमेनन इज नोन एज आयन पोर ट्रांसपोर्ट. ओके, so example of drug that are absorbed by ion pore transport. So example is propranolol, that is a beta blocker used in the treatment of hypertension. Is that clear? So propranolol is a basic drug that forms a ion pair with oleic acid and absorbed by this mechanism. तो आपका प्रोप्रानोल क्या करेगा? ओलिक एसिड जो है आपका मेम्ब्रेन का, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और उसके बाद में उसका एब्सॉर्प्शन होगा. एज सच अगर प्रोप्रानोल ऐसा है तो वो एब्सॉर्ब नहीं होगा, उसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना पड़ेगा. किसके साथ? ओलिक एसिड के साथ, एंड उसके बाद ही उसका एब्सॉर्प्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. इज दैट क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एज द टर्म इंडिकेट, समवन इज पुशिंग इट, समवन इज फैसिलिटेटिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस, something is facilitating the diffusion process. Okay, so it is nothing but the facilitated diffusion. So what is exactly in this process? So carrier mediated system. So there will be carriers, there will be protein molecules which act as a carrier. Okay, so it is a carrier mediated system, operates with the downhill transport down the concentration gradient. means यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे ज्यादा concentration है वहां से जहाँ पे कम concentration है, means जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वहां पे ही मूवमेंट होगा ड्रग का, बट अलोन ड्रग का मूवमेंट नहीं हुआ. जैसे आपका ड्रग फ्री फॉर्म में है, वो ड्रग मूवमेंट नहीं हुआ, दो देयर एग्जिस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सच मॉलिक्यूल देयर एग्जिस्ट ए कैरियर सिस्टम. ओके, सो दैट कैरियर विल कंबाइन विथ योर ड्रग एंड दैट विल क्रॉस द ड्रग साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू द अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, तो उसको बोलते हैं facilitated diffusion. So carrier mediated system operated with the downhill transport down the concentration gradient, and the driving force again here is a concentration gradient. Example of drugs absorbed by facilitated diffusion is example glucose, entry of glucose in the RBC, entry of glucose in the RBC. So RBC जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें जो एंट्री होता है ग्लूकोज का, उसके लिए सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट द facilitation of diffusion of glucose into RBC. In the similar manner, there is another absorption of vitamin B12. For the absorption of vitamin B12 in the stomach, you require a intrinsic factor. You require a intrinsic factor, that is a glycoprotein, and that is essential for the absorption of vitamin B12. That glycoprotein will act as a carrier for the vitamin B12. Okay, so this carrier will combine with vitamin B12 and it will cross the cell membrane. Now vitamin as such alone will not cross the cell membrane, but when it is combined with the intrinsic factor it can cross the cell membrane. This is known as a facilitated diffusion. Facilitated diffusion. So something is facilitating the diffusion process. Who is that? That is nothing but the carrier protein. So carrier protein is increasing the diffusion
or facilitating the diffusion, that carrier protein is very important. Okay, and most of them, such a carrier protein, most of them are a glycoprotein. Okay, and you know, glycoproteins are present in the GIT, in the membrane of GIT for the absorption of drug. And this question was asked in GPAT 2021. GP, that is GP, glycoproteins are present. Glycoproteins are present, and your options was their liver, then kidney, then linings of GIT. Answer was linings of GIT. Okay, so such glycoproteins are present in the GIT for the to increase the absorption of various kind of drugs. Okay, so such glycoproteins. Okay, so that is known as facilitated diffusion. Is that clear? Now we'll see. I will try to explain you again all the process. So what is passive diffusion or what is simple diffusion? So passive diffusion or simple diffusion, it is a diffusion of drug. It is a diffusion of drug across the cell membrane via concentration gradient. So here outside the cell you will have high concentration, inside the cell you will have low concentration, and this will be a driving force for the movement of your drug molecule. This is nothing but the simple diffusion or passive diffusion. Okay, here we are not taking any help from the protein, so this is known as a passive diffusion, and there is no requirement of any energy in this process. Now we'll see facilitated diffusion. In this facilitated diffusion, what happens? There is a helper protein. Okay, there is a helper protein, so that is known as a carrier protein that will help your molecule to cross the cell membrane. Okay, so there may be again ion channels may be there, channel protein may be there, or carrier protein may be there. Okay, again there are two types in the facilitated diffusion. Carrier protein or carrier channels will be there, or carrier protein alone will be there. So in this case again no energy is required. This carrier protein will combine with your molecule and it will cross the cell membrane. Again this is also passive process. Okay, so in this case again no energy is required. Next process is nothing but the carrier mediated transport. So in this case also you will require a protein carrier. There will be specialized transport mechanism for the molecules like vitamins, monosaccharides, amino acids. Okay, a membrane protein known as a carrier. Okay, so the protein present in the membrane, it is known as a carrier, and it will bind reversibly or non-covalently. It will form a complex with your drug molecule, and that complex can be transported across the cell membrane, and where after crossing the cell membrane that complex will be dissociated, that complex will be dissolved, and it will release the drug, and the protein will come back to its original place for to receive the another molecule of drug. Okay, this is known as carrier mediated transport. Okay, so carrier has always non-polar outer surface. See, suppose that आपने आपके घर पे कोई फंक्शन है और बहुत सारे मेहमान को आपने इनवाइट किया है, ठीक है, और आपका घर आपके जो बस स्टैंड है गांव का उससे थोड़ा सा दूर है, तो बहुत सारे लोगों को आपका घर का मालूम नहीं है कहाँ पे एग्जैक्ट। तो आपने क्या किया, एक दो बच्चे को बस स्टैंड पे रख दिया, वहां पे जाके बस स्टैंड पे प्लांट किया कि उनको बोला है कि कोई भी मेहमान आए तो उनको वहां से उठाने का, घर पे लाके छोड़ने का, और फिर से वापस वहीं पे जाने का और दूसरा मेहमान को उठा के घर पे लेके आने का। द प्रोसेस इज सेम, carrier mediated transport. That means what? There are certain carrier proteins on the your intestinal membrane that will carry a drug. It will form a complex with the drug, and the complex now can be cross the cell membrane. आपका ड्रग जो है वो it is not able to cross the cell membrane. जैसे आपका ड्रग है फ्री फॉर्म में, वो तो क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन जब तक वो ड्रग आपके कैरियर प्रोटीन के साथ कंबाइन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, जब तक वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता तब तक उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, और वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा उसके बाद में उसका एब्सॉर्प्शन होगा और वो दूसरे साइड पे लेके जाके उसको डिसोसिएट होगा वो कॉम्प्लेक्स, और ड्रग रिलीज हो जाएगा, और वो जो प्रोटीन है वो वापस आपको कहाँ पे आएगा, उसके ओरिजिनल प्लेस पे आएगा। ओके, सो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन, मोनोसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स, a membrane protein known as a carrier that will bind reversibly or non-covalently with your drug molecule, and now this complex is able to cross the cell membrane, and the complex is transported across the cell membrane, and there it will dissociate and release the drug molecule, and the carrier protein will come back again to its original place.
Okay, such carriers have always non-polar outer surface. Okay, so this is known as a carrier mediated transport system. Now this process, the carrier proteins, they are structure specific, means for a particular drug there will be a particular carrier system. Okay, जैसे आपने देखा है कि विटामिन B12 के लिए ग्लाइकोप्रोटीन लगता है, दैट इज नोन एज अ इंट्रिंसिक फैक्टर. तो इंट्रिंसिक फैक्टर सिर्फ विटामिन B12 के साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं करेगा. दैट मीन्स दे आर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, they are structure specific. Okay, and the kinetics is described by the mixed order kinetics or Michaelis-Menten kinetics. The process of carrier mediated transport and the kinetics of this system is mixed order kinetics and it is described by Michaelis-Menten equation. Okay, and this carrier mediated system is a non-linear kinetics. It will follow a non-linear kinetics and the process is saturable. ठीक है, जो आपने प्रीवियस प्रोसेस देखा था, जैसे आपने पैसिव डिफ्यूजन देखा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा था, दोज प्रोसेस वाज नॉट सैचुरेबल. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज सैचुरेबल. कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन जो होता है उसका अमाउंट जो होता है लिमिटेड होता है. आपने दो या तीन ही बच्चे प्लान किए कहाँ पे, बस स्टैंड पे लोगों को लाने के लिए. लेकिन अगर मान लीजिए कि, और एक वैसे ही होता है कि कैरियर प्रोटीन जो होता है वो लिमिटेड होता है और उसकी वजह से the process is saturable. Is that clear? Now we'll see again next point from carrier transport. So examples of drug, those are transported by this method. B complex vitamins. The bioavailability of drugs absorbed by such system decrease with the increasing the dose. As the process is saturable, so the bioavailability of drugs absorbed by carrier mediated transport will decrease अपॉन इंक्रीजिंग द डोज. अगर आप जैसे ही डोज बढ़ाओगे तो वैसे बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, सो इट विल बी डिक्रीज. द कैरियर mediated transport is for absorption of vitamin B complex. Now we'll see the next point from this. Such carriers are located at a specific area of your intestine. जो जैसे कैरियर होते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स, वो कैरियर प्रोटीन्स विल बी लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक एरिया इन द इंटेस्टाइन. आपका इंटेस्टाइन का एक ऐसा एरिया होगा कि जहां पे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन अवेलेबल है फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. तो वो जो एरिया है, वो जो विंडो है, दैट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन विंडो. ओके, सो लोकेशन ऑफ सच कैरियर प्रोटीन is known as absorption window, and this was again question in GPAT, so it is very important. What is absorption window? So absorption window क्या होता है कि जो आपको कैरियर्स लगते हैं मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसफर करने के लिए, जो कैरियर्स होते हैं वो कैरियर के, देखो आपका इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ा है, वो इंटेस्टाइन में एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि जहाँ पे कैरियर सिस्टम अवेलेबल है आपका. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन अवेलेबल है उसको बोलते हैं, वो एरिया को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन विंडो. द एरिया ऑफ योर intestine where there is a lot of carrier proteins are present, and that area is known as absorption window. This was the question again in GPAT, I think GPAT 18. So what is absorption window? Okay, so it is very important. Okay, so in this carrier mediated transport, so these lines that the kinetics are described by mixed order kinetics, they are structure specific, and absorption window, it is very important. They can ask the question on this. Is that clear? Now we will see the next. So last process is nothing but the active transport. All the process whatever we have discussed, that is diffusion, facilitated diffusion, active transport, facilitated diffusion, then carrier mediated transport, all these was having no requirement of energy. जिसमें जो पहले प्रोसेस थे पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर mediated transport, उसमें आपको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं था. तो दैट्स व्हाई all these processes is nothing but the passive. Now we will see active transport, and this active transport will require energy. This active transport will require energy in the form of ATP, and that's why it is known as active transport. उसमें भी दो टाइप होता है. There are two types of active transport: primary active transport and secondary active transport. So in that primary active transport, what happens we'll see. So direct ATP requirement is there in case of primary. So for example, one molecule or one ion of drug will move in only one direction.
and it is called as uniporters. Example is absorption of glucose. You can see here in the diagram, it is a uniporter, that is movement of drug or ion in one direction only. So that is known as uniport, and this process requires energy. It may be against the concentration gradient or against the electrochemical gradient, or it is also known as uphill process. So ATP driven proton pump in your stomach. So जब भी आपके स्टमक में प्रोटॉन पंप होता है वो एक्सचेंज करता है. सो सोडियम इज एक्सचेंज विद हाइड्रोजन. तो सोडियम प्रोटॉन पंप उसको बोलते हैं. तो एक्सचेंज होता है, उसमें एक्सचेंज होता है. ठीक है. अगेन उसमें थर्ड टाइप है एबीसी, मींस एटीपी बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है. दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स और टॉक्सिन. P glycoprotein is a classical example of such type of ABC protein and responsible for the pumping of anti-cancer drug which are hydrophobic, and it will pump the your drug outside the cell. Ideally आपका जो एंटी कैंसर ड्रग है वो सेल में रहना चाहिए ताकि वो सेल को डिस्ट्रॉय कर सके. लेकिन क्या होता है उसमें, तो एटीपी बाइंडिंग कैस्केड प्रोटीन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, वो आपके ड्रग को बाहर ढकेलता है. तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन. अगेन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका सेकंड टाइप क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, देयर इज नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. तो ये जो तीन प्रोसेस थे, एटीपी रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट था उनमें, आयन ट्रांसपोर्टर्स या फिर आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर्स. लेकिन जो सेकेंडरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें आपका डायरेक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उसमें भी दो टाइप है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट. तो सिम्पोर्ट मीन्स व्हाट, movement of two molecules in the same direction. So you can see here in this diagram, symport, there are two molecules, they are moving across the membrane in same side, that's why they are known as symport. And antiport means what, counter transport involve the movement of molecules in the opposite direction. So you can see here antiport. So one molecule is going inside the cell membrane, one molecule is moving outside the cell membrane simultaneously. That is known as a counter transport or antiport. Is that clear? So examples of symport is nothing but the sodium glucose transporter, and the example of antiport is nothing but the sodium hydrogen exchange pump in the kidney. Is that clear? This was about active transport. So they can ask about ATP binding cascade in the GPAD, then they can ask about the symport antiport. Actually there was already questions in the GPAD regarding this symport. Is that clear? Now we'll see the next point. So next process क्या है absorption का, vesicular transport. Vesicular transport. So उसमें again you will have two types in the vesicular transport. Vesicular transport means transport of drug inside the cell by cell itself. Either cell will eat it or either cell will drink it. So that is known as vesicular transport. इसमें आपका दोनों फार्माकोलॉजिकल, मतलब फार्माकोलॉजी का भी कवर हो जाएगा और आपका बायोफार्मास्यूटिक्स का भी कवर हो जाएगा. ठीक है. तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, दो टाइप आता है. एक आता है पिनोसाइटोसिस, एक आता है फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस मींस सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग और engulfing of solid particle by cell. That is a phagocytic. Diagrammatic, I will explain it with diagram. So this is a process of pinocytosis. Pinocytosis means cell drinking. Cell will drink the solutes in the fluid. That is the process known as pinocytosis. And what is phagocytosis? Phagocytosis means cell eating or engulfing of larger particles by cell. Actually phagocytic cells होते हैं अपने WBC में, फैगोसाइटिक सेल होते हैं. वो क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल पार्टिकल है उसको खा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया मर जाता है. सो दैट इज अ फैगोसाइटिस. सो इट टेक्स इन अ लार्जर सब्सटेंसेस बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. सो फैगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग और सेल एनग्लपिंग. इज दैट क्लियर? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आपने देखा है उसका क्विकली रिवीजन करेंगे अपन. डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाया concentration gradient और electrical gradient. In case of facilitated diffusion क्या होता है, there will be protein which will facilitate the transport across the cell membrane. Again यहाँ पे concentration gradient होगा और electrochemical gradient होगा. But in case of active transport, what happens? There is a special proteins that will carry your drug across the cell membrane, and it will require energy in the form of ATP.
इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन दिस केस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज uphill process. Okay, the process of movement of drug from high concentration to low concentration is known as downhill process. Okay, so movement of drug from low concentration to the high concentration, that is known as uphill process. That is known as uphill process. Is that clear? कि uphill process, downhill process क्या होता है? ये downhill मतलब मान लीजिए कि आपको एक बड़ा सा एक पत्थर है, वो आपको किसी हिल पे लेके जाना है, तो दैट इज नोन एज अप हिल। वहां पे आपको एनर्जी लगेगा, और वही पत्थर ऊपर से छोड़ देना है, तो उसके लिए क्या एनर्जी नहीं लगेगा। ओके, दैट इज डाउन हिल। डाउन हिल मीन्स, डाउन हिल मतलब क्या? डाउन हिल मतलब हिल के नीचे, और अप हिल मतलब क्या? हिल के ऊपर लेके जाने का है। तो आपको पत्थर लेके जाने के लिए एनर्जी लगेगा, लेकिन वहां से लेके आने के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहां से छोड़ दे सकते हो, छोड़ दो, ढकेल दो उसको, वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो हियर दिस देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, the process is known as downhill process, and where there is a against the concentration gradient, where there is a transport of drug molecule against the concentration gradient or against the electrochemical gradient, that is known as a active transport where energy is required. Okay, is that clear? यहाँ पे समरी आपका हो गया। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि this is a passive diffusion, movement of oxygen across the cell membrane, then this is a plated diffusion थ्रू एक्वियस चैनल, मूवमेंट ऑफ सोडियम अक्रॉस द चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन होगा, ये डिफ्यूजन थ्रू एक्वियस चैनल होगा, ये डिफ्यूजन थ्रू ये नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, ये ग्लूकोज का फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा, या फिर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है, वो सोडियम को अंदर लेके जाएगा, सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को अंदर लेके जाएगा। नाउ दिस इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट इज अ एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ विल सी लास्ट स्लाइड, दिस विल बी अ लास्ट स्लाइड। सो ड्रग permeation means what? So the process of absorption, distribution, metabolism and elimination by deposition of drug in the wall of and permeation of drug across the membrane barrier. All these processes are nothing but the drug permeation. Okay, or you can parallelly call it as a drug absorption. So drug permeation, drug absorption process depends on three factors. Actually it depends on a lot of factors, but all factors are not important for GPAT. So the most important factors are solubility. Okay, so ability of drug to cross the lipid membrane depends on the solubility of the drug, and most of the drugs are lipid soluble and unionized, and they are rapidly absorbed. For the absorption, lipid soluble drug is important. So if your drug has lipid solubility, it will cross the cell membrane easily. So lipid soluble unionized form of drug will be absorbed rapidly. Remember one thing. Okay, so unionized lipid soluble form of drug will be absorbed rapidly through the membrane. Why? Because our membrane itself is a lipid, that's why. And there is a rule of thumb, like dissolves like, that's why lipid soluble molecules are easily absorbed from the, again that doesn't mean that water soluble molecules will not absorb at all. So low molecular weight water soluble substances, they are absorbed through aqueous pores. Okay, is that clear? So solubility will affect the absorption. Again, next, concentration gradient, there must have a concentration gradient for the absorption. So higher will be the concentration gradient, higher will be the difference in the concentration across the both side of cell membrane, faster will be the absorption. Okay, and here one thing is important, three form of drug is only able to cross the cell membrane. So drug should not be bind with plasma proteins or etc etc. It should not bind with the protein for diffusion. It should be available in the free form for the diffusion. Exception is again facilitate diffusion. In that case, your carrier molecule will facilitate the diffusion. And exception is also again active transport. So in that case also you require a carrier protein. Okay. So concentration gradient is also important. Again, surface area and vascularity means more will be the surface area, more will be the absorption. More will be the vascularity, means more will be the blood supply, more will be the absorption. Okay, so surface area and vascularity is directly proportional to the absorption. Okay, now ionization.
most of the drugs they are weak acids or weak bases. Okay, they will exist in a ionized form or ionized form, unionized form. So their existence will be either they will be ionized or either they will be unionized, and that depends on the pH of gut and pKa of drug. जो ड्रग्स होते हैं वो मोस्टली बेसिक, वीकली बेसिक और वीकली एसिडिक होते हैं, मतलब वीक, दे आर वीक बेसिस और वीक एसिडिक, एंड उनको दे विल आइदर एग्जिस्ट एज अ आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, एंड वो फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड है, पीएच एंड पीके ऑफ ड्रग. ठीक है, जो भी सराउंडिंग का पीएच होता है, जैसे गैस्ट्रिक एसिड में पीएच होता है एसिडिक, इंटेस्टाइन में पीएच होता है बेसिक, जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्रग का आयोनाइजेशन होगा या फिर ड्रग विल रिमेन इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म. सो पीएच ऑफ सराउंडिंग मीडियम और पीएच ऑफ गट एंड पीके ऑफ ड्रग, dissociation constant of drug and pH of surrounding will decide either molecule will remain in a ionized form or either molecule remain in the unionized form. कि आपका ड्रग कौन से फॉर्म में रहेगा, कौन डिसाइड करेगा, pH ऑफ गट, pH ऑफ GIT एंड pKa ऑफ ड्रग. ठीक है, pH एंड pKa डिसाइड करेगा. pKa मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, जो हर एक ड्रग का अलग अलग होता है. तो आपका ड्रग अनआयोनाइज्ड होगा या फिर आयोनाइज्ड होगा, वो डिसाइड करेगा pH एंड pKa ऑफ ड्रग. अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज अ मोर लिपिड सोल्युबल एंड इट इज इजीली एब्सॉर्ब. ठीक है, तो ये हम बता देंगे आपको. सो यू कैन सी हियर इज अ एसिडिक मीडियम एंड हियर इज अ बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम मीन्स व्हाट, pH is less than pKa, and basic medium means what, pH is more than pKa. Okay, so acidic medium means pH is less than pKa, basic medium means pH is more than pKa. Okay, now so your drugs are either weak acid or weak base. Now see, for weak acid, for example, if you take any carboxylic acidic drug, so it will remain in the acidic pH in the form of unionized. Okay, so weak acid will remain unionized, non-ionized or unionized in the acidic medium. Suppose that आपने एस्पिरिन ले लिया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, so एसिटिल सैलिसिलिक एसिड will remain unionized in the stomach, and that will be, that unionized form is lipid soluble and it is easily absorbed. So unionization form will be can cross the lipid membrane. Okay, अनआयोनाइज्ड फॉर्म कैन क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन. ओके, वही एसिटिल सैलिसिलिक एसिड अगर आपके इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे क्या है, बेसिक मीडियम है, वहां पे बेसिक पीएच है, तो वहां पे उसका आयोनाइजेशन होगा. जो वीक एसिड है उसका स्टमक में आयोनाइजेशन नहीं होगा, दैट विल रिमेन इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म. और वही वीक एसिड अगर बेसिक पीएच में जाता है तो उसका आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज नॉट able to cross the cell membrane. Unionized form of drug is able to cross the cell membrane. Ionized form is not able to cross the cell membrane. Is that clear? Now weak bases. Weak base है, मान लीजिए आपका कोई ड्रग है weak base, वो स्टमक में गया तो वहां पे उसका आयोनाइजेशन होगा. ठीक है, वहां पे उसका आयोनाइजेशन होगा और वहां से वो एब्सॉर्ब नहीं हुआ. लेकिन जैसे वो आपके इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो वहां पे your drug will remain in the form of unionized, and that unionized form you know that is a lipid soluble and it is easily absorbed. ठीक है, तो pH मैटर करता है, आपका ड्रग आयोनाइज होगा या फिर अनआयोनाइज रहेगा. वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो एसिड एनवायरमेंट में अनआयोनाइज होते वहां से उनका एब्सॉर्प्शन होता है, और जैसे बेसिक मीडियम में जाएंगे उसका आयोनाइजेशन होता है और एब्सॉर्प्शन नहीं होता है. अगेन एग्जैक्टली अपोजिट टू द बेसिक ड्रग. दोज ड्रग्स व्हिच आर वेरी बेसिक, वो बेसिक जो ड्रग है उनका आयोनाइजेशन होगा एसिड पीएच में, वहां से वो एब्सॉर्ब नहीं होंगे, और जैसे ही वो इंटेस्टाइन में जाएंगे उनका वहां पे दे विल रिमेन इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म और वहां पे उसका एब्सॉर्प्शन होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कि जीपेट में आता है क्वेश्चन. एंड दिस परसेंटेज आयोनाइजेशन इज गिवन बाय Henderson-Hasselbalch equation, and for weak acid it is pH minus pK log of unionized divided by ionized, and it is exactly opposite to the for weak bases. For weak bases it is a pH minus pK log of ionized divided by unionized. You can see here it is exactly opposite, ionized divided by ionized for weak acids, and for weak base ionized divided by unionized. Is that clear?
So this was all about the process of absorption and this lecture was a demo lecture part 2. ये demo lecture part 2 था और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। उसके लिए जो फीस है वो आपको मालूम है, द टारगेट जीपैट नाइपर 2022 ऑनलाइन कोर्स, द फीस इज 8,000 rupees for 1 year. In that fees you will be provided with online lectures, you will be provided study material in the form of hard copy. जो स्टडी मटेरियल है वो आपको आपके घर पे मिल जाएगा, आपको शिप किया जाएगा। आपको तो मालूम है फैकल्टी कौन है, मैं खुद फैकल्टी हूँ, खुद 5 बार क्वालिफाई हूँ जीपैट अच्छे से रैंक से, और बाकी जो 2 फैकल्टी है और अपने वो भी गवर्नमेंट से ही है और उनका भी जीपैट क्वालिफाइड है और वो भी जीपैट के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपर्ट फैकल्टी है यहाँ पे, स्टडी मटेरियल मिलेगा 8,000 रुपीज में और आपको 1 साल तक ये इतने फीस में आई थिंक कोई भी नहीं देता है। इट इज अ रीजनेबल फीस 8,000 फॉर 1 ईयर। यू विल हैव स्टडी मटेरियल आल्सो। एक तो जो क्लासेस अवेलेबल है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, वो उसका अलग से अमाउंट लेंगे। तो वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर including study material in the fees itself. Okay, so those students who want to join, they can join our online coaching program. You can WhatsApp or you can call us on this number. Thank you very much for watching this video. अगर कोई डाउट आते हैं आपको तो you can call me on these numbers.